Good morning, everyone, and welcome to Morning Concur. First, we'll start with technical and derivatives update. If we see in yesterday's trading session, we have seen a further sell-off in the index, where the index was in the morning we see a gap down on 25 odd points, and that gap was still maintained throughout the trading session. And we had released the crucial 17,600, and Nifty just managed to float above 17,500 levels. Now, technically, we are seeing the Nifty is at a very crucial juncture. This should be held by the index for any last of move, or else we could see further selling towards 17,300 and 17,200 zone, which comes to be 200 DMA for the Nifty index. So coming to the today's expiry per se, we are witnessing there could be a bounce in the market, as we are seeing a 130, 140 points gap up in the SGX also. So this bounce could be a very short covering or very minimal bounce due to expiry and volatility. That issues are there. But until unless we don't close about 17,800, 17,900, some relief or some respite is very difficult for the bulls to go ahead from here, because technically we are again in that budget day range only, which is ranging from 17,900 to 17,300 zones. And if you see 7,200 DMI is also now placed over there, so there could be some meaningful respite at these levels also. Now coming to the Bank Nifty also, if you see again, it was trading with similarly to the index only, and still the budget do the head. Bank Nifty just managed to stay above 40,000 levels. So now 39,500 is the last leg for the Bank Nifty index, feeling that it could go towards 39,000 zones, but we expect a bounce today because all the major indicators are in the oversold territory. By the PCR, we are seeing the RSI, MACD, everything is in the oversold. So some bounces expected, and the NFT, the index has to move towards its 10 DMA that is placed near 40,000, 41,000. So some short covering of moves could be visible in both the indices as of now. So coming to the derivatives data, if you see in the if you see there was short built up in the Nifty index by the tune of 10 odd percentage points, and in the by the 10 of percentage points, and in the Bank Nifty, if you see, there was a long unwinding in the index. So overall, there was some pressure in the index, and if you see in the option for persistent options, there were 40,400, 40,400, 40,500. We could see addition in the call side. One in the put side, if you see 39,000, 38,800 for the Bank Nifty. And similarly in the Nifty, if you see 17,500 and 17,400 are the major hurdles where the corporate trading is seen. Well, in the call side, if you see 17,600, 17,700 are the major hurdles where the Nifty could be entangled in that. Now, coming to the sector specific, no major sectors were there. Banking were the major laggards in the index, and there was they were and all the index were in the red also, or majorly media and metal were the top losers. We can see India VIX is also rising, which is very negative, and India VIX was yesterday shot up by 12 odd percentage point. It is now trading above again 15 and 16 odd levels, which is again hindering that it could move towards 18, 19, 20 levels. So some volatility could increase in the market going ahead. Now coming to the FIS statistics, FIS have again shorted to the tune of 30,000 contracts, and now they are now dead short by more than 1 lakh plus counter, which they tried to cover, but again they had built up their positions, and now long short ratio stands at 23%. So FIS cash are merely they are short by 579 crores, and while PIs are along by 371 crores. So coming to the sectors where this respite could be, there are auto, FMCG, and cement sectors, which we are liking. And secondly is the cooler and the AC market space, which yesterday we had also said this sector could be a little bit in upward of buses there because the temperatures are rising. So this should be kept on radar, and any depths towards this level should be used as an opportunity to be bought. Basically, this AC cooler market and autos and FMCG are structurally strong in the index. FMCG being a defensive side is also good for it. So overall, that's it from mine. I'll hand over to Archana Madam for more updates. Thank you. Thank you, Hitendra. Good morning, team. So a few updates from my side, starting with Mahindra CI Automotive. So the automotive component supplier has recorded a massive 153% YY growth in consolidated profit at 195 crore in Q3 FY23. This was led by the strong operative performance and the exceptional gain. The consolidated revenue for the quarter came in at 2,247 crores, grew by 35% YY, while on the operating front, the EBITDA increased by 62% YY to 292 crore, with margin expansion of 220 bips for the quarter. The company has an exceptional gain of 38 crore against loss of 13 crore in this quarter, which has led to the outperformance compared to the same quarter last year.
On SG Infra Engineering, the company has been declared as L1 bidder for bidder by RVNL Chandigarh for the project in the Himachal Pradesh. The bid project cost by SG Infra is rupees 446 crore and the construction period is 30 months. This order is positive as the company is trying to diversify into non-road sector and targeting 25% of its revenue to come from these areas in next 2 to 3 years. We have buy rating on the stock with a target price of 1067. On Orient Cement, the non-binding MOU between the company and Adani Power Maharashtra for establishing a cement grinding unit at Tiroda, Maharashtra stands terminated as the latter could not obtain the required MIDC clearance for the subleasing the land required for the facility. So this comes as a negative development for both Orient Cement as well as the Adani Power. On Aliola contracts, the company has received order worth 1.5 billion for civil and structural works. Order inflow will, till date stands at 48 billion and the company has achieved 92% of FY23 order book guidance. This order inflows bodes well for the company and we have buy rating on the stock with a target price of 650. Yesterday, we came out with the sector cement sector update. Our interaction with the cement dealers suggests that the average cement price at all India level has increased by 2%, which is like roughly rupees 3 to 10 rupees per bag on month-on-month basis in the month of Feb 2023. Region-wise, price hike is maximum for South with 3% increase, followed by Central region with 2% increase. However, in the North, we notice volatility in the prices and need to watch for the trend. Energy prices have seen sharp decline in Feb 2023 and average imported coal price stood at $145 per ton and the which is like decreased by 15% month on month and the price is one of the lowest since March 2022. So this bodes well for the sector per se. In the sector, we have buy rating on the stock with Ultratech with a price target of 7965. Yesterday, we attended the analyst meet of GRSC. Few takeaways from that. The company currently has a strong order book and there are several orders in the pipeline that have yet to be fulfilled. According to the management, there have been no delays in the order execution. The company's revenue increased from 1,757 crore in March 2022 to 1,960 crore in December 2022, which is a growth of 11% for the 9-month period. And PAT also has increased from 152 crore to 173 crore for the same 9 months. And however, one area of concern is the company's EBITDA margin, which has experienced some volatility and have been declining. Despite this, the PAT margins have been remained stable. The management expects that FY25 will have the maximum revenue recognition. As such, FY25 is expected to have the highest revenue and maintain an average PAT margin of 7.5% to 8%. The company has a strong order book of 22,000 crores and forecast to achieve till 35,000 crore in the next 2 to 3 years. On Sonata, the company has acquired 100% of US-based Quant System Inc. for cash consideration of $160 million USD, involving the upfront payment of $65 million USD and balance $95 million USD will be paid as announced in the next 2 years. This values the company at 4.3 times CY22 sales, and this acquisition will add close to 18% to the Sonata's international revenue and will expand Sonata's expertise in banking and financial services, healthcare, life science, which are its focus verticals. This bodes well for the company as Quant's strong partner ecosystem of players, including AWS and Google Cloud, will help the company win larger deals and add 2 large clients to its top 5 client list. So overall, bodes well for Sonata in mid to long term. So that's it from my side. Now I request Prabhakar sir to take it from here. Thank you and over to you, sir. Good morning, team. Tata Power management was yesterday in CNBC, and they gave few data. I think few days before I have discussed this. The Mundra power plant, they are operating at higher capacity, and with power demand to increase, they will be a major beneficiary. Mundra power is about 4,000 megawatt of power, and they are saying they will operate at full capacity. And coal prices have also fallen to $200. So this is something to watch out for.
because there has been a huge power demand, and with the capacity addition being very slow, I think Tata Power will be a major beneficiary. Venus Remedy gets marketing approval for cancer drug from Uzbekistan and Palestine. So I don't know what will be the impact, but we don't track the stock. Visakha Industries has announced stock split. So 10 rupees stock will become 2 rupees stock. So one stock will become 5 stock. So this should be short-term positive for the stock. ITI will become, will have a new CMD, Mr. Rajesh Rai, and the CMD will be for 5 years from 21st February 2023. Now, this is something very positive. Why it is very positive is, now Mr. Rajesh Rai has 30 years experience in telecom industry. So normally PSUs have somebody from the government coming there. No, he is from telecom. Now he has worked as GM as MTNL, then Chief Technological Officer in MTNL. So he has had a lot of roles even for CDMA, 2G, 3G and 4G also he has worked. So he has some experience. That is something very positive for ITI. That is why the stock has rallied yesterday. Tamil Nadu Mercantile Bank will be opening 7 branches on 23rd, that is today, 23rd February, of which 6 branches will be in Tamil Nadu, 1 in Andhra. So, but we don't track this stock very closely, so we won't be able to comment. Kotak Special Situation Fund on Wednesday announced an investment of 1,070 crores in Biocon. The proceed will be used to fund the Biocon biologistic acquisition of biosimilar business of partner. But here also Syngene is something we like, not Biocon. They need to pay their debt. That is very important. Mahindra CIE has been one stock which we have been tracking very closely and we have been recommending. It has been our Diwali pick. It has reached our target. But very important is the result is very good. And Mahindra CIE has a few European operations, but they are selling. It is on block. They will very soon sell it. So that is the key takeaway, because all their operation, it is a multinational company. And very soon Mahindra CIE will be CIE Automation, which will be a MNC company. Mahindra will move out now, and their revenue was higher by 34% at 2,246 crores, and their profit after tax was higher by 51% at 194 crores. And the company has provided loss on fair value of disposal of asset as 927 crores. This is an asset which is there on the block. So and even UK assets, and they are saying they will be on the block only. So, but con call is not held. So we will get more details tomorrow. Sharda Energy has been declared successful bidder for a coal mine operation of Kalyani underground mines in the state of Chhattisgarh on revenue sharing of 4.5% basis. So I think these are the news. With that, over to you, Kshitija. थैंक यू सर. एक कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. स्टार्ट करते हैं टाटा पावर से. टाटा पावर के ओवरऑल हमने देखा है कि काफी पावर की काफी सारे डिमांड है. तो टाटा पावर के जो मुंद्रा पावर प्लांट्स है वो उसके 4000 मेगावाट के कैपेसिटी, और वो बता रहे हैं कि वो फुल कैपेसिटी से रन करेंगे. तो वो पॉजिटिव न्यूज होगा टाटा पावर के लिए. इसके चलते कोल प्राइस में भी $200 की जो गिरावट देखने को मिली है, जो ये पॉजिटिव रहेगा टाटा पावर्स के लिए. वीनस एमिडीज के ऊपर है, वो उनको कैंसर के ड्रग के रिलेटेड एक अप्रूवल मिला है. तो ये स्टॉक हमको देखने को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए. विशाखा इंडस्ट्रीज के ऊपर अपडेट है. स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, 10:2 स्प्लिट होने वाला है. तो ये एक हमको मोमेंटम में देखने को मिल सकता है. थोड़ा सा उसमें अपसाइड बायस हो सकता है विशाखा इंडस्ट्रीज में. अगला है ITI के ऊपर एक राजेश राय है, जो MTNL से आए हैं. वो 5 इयर्स का टेन्योर के लिए आए हैं. वो CMD है. ये इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि उनको 30 साल का तजुर्बा है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में. वो GM रह चुके हैं MTNL में, चीफ टेक्निकल ऑफिसर भी रह चुके हैं, और उन्होंने 3G 4G ये सेगमेंट में काम किया है. तो हमें लगता है कि ITI के लिए ये नए CMD का आना एक पॉजिटिव न्यूज हो सकता है.
तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक ने बताया कि वो 7 नए ब्रांचेस ओपन करने वाले 23 फेब से, जिसमें कि 6 ब्रांचेस तमिलनाडु से होने वाले हैं और एक आंध्र प्रदेश से होने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। महिंद्रा सीआई जो एक हम लगातार हम बोलते आ रहे हैं कि हमें ये काफी स्ट्रांग लगता है, ये हमारे दिवाली पिक भी रह चुका है। रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने को मिले हैं। इनका ज्यादातर यूरोपियन ऑपरेशंस रहता है, मल्टीनेशनल कंपनी है। आगे चलते हुए ये महिंद्रा सीआई ऑटोमेशन होने वाला है, जहाँ से महिंद्रा उसमें से निकल जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो उसके जो प्रॉफिट्स है वो भी काफी पॉजिटिव देखने को, रिकॉर्ड हाई पे है। 153% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 195 करोड़ देखा गया था क्वार्टरली एंडेड दिसंबर 22 के लिए। और ये जो उसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू क्वार्टर के जो है वो 2247 करोड़ ग्रीव है 35% ईयर एक साल के मुकाबले। तो काफी कुछ अच्छा है। तो ये हमें लगता है कि ये आगे चलते भी ये कंपनी काफी पॉजिटिव रहेगा। मार्केट में करेक्शन में जब भी इसमें डिक्लाइंस मिलता है तो हमें इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। तो उसके बाद है एजी इंफ्रा इंजीनियरिंग। तो कंपनी ने अ, एक उनको ये ऑर्डर मिला है रेल विकास निगम लिमिटेड से। चंडीगढ़ का ये प्रोजेक्ट रहेगा हिमाचल में। ये जो इंफ्रा है उसका जो कॉस्ट है वो 466.11 करोड़, और ये कंस्ट्रक्शन पीरियड है 30 महीनों के लिए। तो ये ऑर्डर बुक पॉजिटिव है। तो हमारा इसमें बाय रेटिंग है 1067 का। आगे है एक अपडेट है ओरिएंट सीमेंट के ऊपर। तो हाल ही में ये उनका एक एमयू साइन हुआ था अडानी पावर जो महाराष्ट्र में यूनिट है उनके साथ, जो एक सीमेंट प्लांट एस्टेब्लिश करने वाले थे तिरोड़ा में। बट उनको एमआईडीसी से कुछ क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण ये फिलहाल अभी नहीं ये नहीं होगा। जो उन्होंने ओरिएंट ओरिएंट सीमेंट और अडानी पावर का जो कुछ एमओयू जो उन्होंने साइन किया था ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये शायद नेगेटिव न्यूज हो सकता है। आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारा ये मानना है कि कंपनी को ऑर्डर बुक मिला है 1.5 बिलियन, जो सिविल और स्ट्रक्चरल वर्क के लिए होगा। ये एक अभी तक के कंपनी ने 48 बिलियन तक के ऑर्डर इन्फ्लोस उन्होंने किया है, और उन्होंने 92% अचीव किया है FY23 के ऑर्डर बुक के गाइडेंस के ऊपर। तो ये पॉजिटिव न्यूज होगा आलू वाले के लिए। हमारा जो बाय रेटिंग है इसका टारगेट प्राइस है 650। अगला एक अपडेट है सीमेंट सेक्टर के ऊपर। हमारे इंटरेक्शंस हुए काफी सारे सीमेंट डीलर्स के साथ। हमें ये पता चला कि ओवरऑल ऑल पैन इंडिया लेवल्स पे सीमेंट में एक 2% का इंक्रीज देखने को मिला है, जो बनता है 3 से 10 रुपया बनता है पर बैग के हिसाब से। तो रीजन वाइज हम देख रहे हैं कि साउथ में 3% का ग्रोथ है, सेंट्रल रीजन में 2% का है, नॉर्थ में हालांकि ये ग्रोथ इतना क्लियरली दिखाई नहीं दे। हमें उसके लिए वहाँ का ट्रेंड वॉच करना पड़ेगा और उसमें समझ में आएगा कि उनको कितना ग्रोथ हुआ है। एनर्जी वाइज प्राइस में भी थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। इम्पोर्ट के जो प्राइसेस है वो $145 के करीब पर टन के हिसाब से देखने को मिला है, जो डिक्रीज है 15% मंथ ऑन मंथ। तो हमें लगता है कि ये एक रिकवरी एबिटा की तरफ आ सकता है। हमारा जो सीमेंट सेक्टर में है वो उसमें अल्ट्राटेक है जो हमारा पॉजिटिव पिक है, और इसका जो टारगेट प्राइस है 796 भी हम रिकमेंड कर रहे हैं। इसके चलते हुए हम इसके और एक है, हमने GRSC का हमने एक एक कॉन कॉल अटेंड किया था। तो इसमें कंपनी ने बताया उनके काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स है। तो उनके जो काफी सारे जो ऑर्डर बुक्स जो उन्होंने है जो पाइपलाइन में, तो उन्होंने काफी वो फुलफिल किया है, उसमें कोई उन्होंने डिले वगैरह नहीं किया है। कंपनी का जो ग्रोथ देखा गया है वो 1757 करोड़ मार्च 22 में था, और जबकि अब दिसंबर में 1960 करोड़ के करीब ग्रोथ देखने को मिला है, जो बनता है 11.55% फ्रॉम 9 मंथ पीरियड, 9 मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इवन अगर कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हो तो 152.33 करोड़ मार्च में देखा गया, जबकि दिसंबर में 172.83 करोड़ देखा गया था दिसंबर 22 में। तो ये तो ग्रोथ है 21.5% का। तो ओवरऑल हमें ये कंपनी थोड़ा स्टेबल लगता है।
तो अगर तो सिर्फ इसमें एक जो कंसर्न था जो हमने जो नोट किया वो EBITDA को लेके था, जो सम वोलेटिलिटी और थोड़ा डिक्लाइनिंग बता रहा हो सकता है ये काउंटर के लिए, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है, हमें काउंटर अच्छा लगता है। सोनाटा के ऊपर और एक अपडेट है जहाँ पे कंपनी ने 100% एक्वायर किया US बेस्ड क्वांट सिस्टम्स को जो कैश कंसिडरेशन में है 160 मिलियन USD है, जिसका पेमेंट वो 65 मिलियन USD में करेंगे, और बैलेंस जो 95 मिलियन यूनिट वो एक 2 पीरियड के स्लॉट में वो होगा। तो ये कंपनी इसके वजह से कंपनी के जो वैल्यू है उसमें 4.3 टाइम्स का बढ़ावा देखने को मिल सकता है। ये एक्विजिशन होगा 18% होगा। सोनाटा इंटरनेशनल वो ऐड करेगा 18% रेवेन्यू ऐड करेगा सोनाटा इंटरनेशनल रेवेन्यू में। सो इससे ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है ये काउंटर के लिए। इससे उनका जो काफी इंटरनेशनल में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बढ़ेगा। हालांकि ये जो क्वांट सिस्टम है उनका ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है AWS और गूगल क्लाउड, ये कंपनी के थ्रू, तो इनके ये ओवरऑल टॉप 5 लिस्ट में उनके जो है क्राइटेरिया उसमें ये हमें ऐड होता हुआ दिख रहा है। आगे लास्टली एक आज मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। आज एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। हमने देखा है कि लास्ट 4-5 दिनों में मार्केट में करेक्शन देखा है, तो हो सकता है कि हमारा ये मानना है कि ये जो मार्केट में जो करेक्शन आ रहा है ये टाइम वेस्ट है। हमने अब तक बजट डे का जो लो है दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी उसको हमने अभी तक ब्रेक नहीं किया है, तो हमें लगता है कि ये शायद कहीं ना कहीं उसके आसपास जाके ये फॉल रुक जाएगा। और हम ये नहीं बोल रहे कि यहाँ से एक तरफा तेजी आएगी, बट देन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोअर लेवल्स पे जो बजट डे का जो लो है उसके आसपास जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज को भी मैच करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नियर टर्म में अगर एक्सपायरी खराब होती है और अगर फर्स्ट वीक में अगर हमको सेलिंग दिखता है मार्च के, तो हम व्यू चेंज करेंगे। बट जब तक ये 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं करते, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये टाइम वाइज करेक्शन है, ये प्राइस वाइज करेक्शन नहीं है। लास्टली एक जो हम ध्यान रख सकते हैं, जो सेक्टर्स तो जो ठीक लग रहा है वो ऑटो है, सीमेंट और FMCG है। ये 3 सेक्टर्स है जहाँ हमें ध्यान रखना है। मार्केट में अगर थोड़ा भी स्टेबिलिटी आती है तो ये सेक्टर्स में आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और आज एक्सपायरी है तो हो सकता है कि मार्केट 17,600 से 17,650 के आसपास निफ्टी का हो सकता है एक्सपायरी के क्लोज। और बैंक निफ्टी में ज्यादा पॉजिटिव शायद नहीं होगा, हो सकता है कि नेट 40,000 के आसपास ही कहीं पे इस पे आपको एक्सपायरी का क्लोज देखने को मिल सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द मॉर्निंग कॉल। यू मे लॉग इन आउट नाउ। थैंक यू।